So with regard to the question that I had given you yesterday, these are the average values of powers across different passive elements. Across the 1 ohm resistor, the average power is 1.4 watts. Across the 2 ohm resistor, the average power consumed is 5.097 watts. And across the reactive elements, the average power consumed is 0. Okay. So we'll be doing more numericals towards the end. Uh, Now today we will discuss about maximum power transfer theorem. This is our Thevenin's equivalent circuit. We have the Thevenin's voltage VTH, we have the Thevenin's impedance ZTH, and we have the load impedance, that is ZL. Now this Thevenin's impedance is itself comprised of the resistive element as well as the reactive element. It's equal to RTH plus J times XTH. XTH implies the combined reactance of the inductance as well as of the inductor as well as the capacitive element. Similarly, the load can be purely resistive load, it can be a purely inductive load, a purely capacitive load, or it can be a combination of these different passive elements. So ZL can also be written as RL plus J times XL. It's a combination of resistive element as well as a combination of reactive elements, that is the inductance and capacitance. So the current flowing through this circuit here is I equal to VTH divided by ZTH plus ZL, fine. So that can also be written as RTH plus RL plus J times XTH plus XL. Now we know the power consumed by the load, the average power that's consumed by the load. This load is comprised of resistive part, it will be comprised of the inductive part, it will be comprised of the capacitive part, right? It will be having a resistance, it will be having an inductance, it can be having a capacitance, may or may not be having all of these three. But as far as the inductance is concerned and the capacitor is concerned, the average power consumed by these two is zero. Only the power is consumed by the resistance. That means only the load resistance will be consumed power. So the average power that will be consumed by the load will be equal to 1/2 of uh, I square times RL, where I modulus of I square was actually I into I conjugate. Instead of writing that, we can also write modulus of I square into RL. So this is the power that is actually consumed by the load. Now we want to actually find out the maximum point of this power. How much can be the maximum value of this power that can be delivered to the load. Fine. So substituting for I in this equation, P will be equal to 1/2 of uh, VTH square modulus of VTH square divided by RTH plus RL. This is I square, so RTH plus RL square plus XTH plus XL square. Fine. Into RL. So once we substitute for I here, VTH square divided by RTH plus RL plus J times XTH plus XL square on opening that will be equal to RTH plus RL square plus XTH plus XL square.
Now we need to find out the maximum value of this. जैसे हमने differentiation की थी for in case of DC circuits, we differentiated this with respect to RL and found out the maximum point. Now we do not have only RL here in the load, we also have XL in the load. So what we'll be doing is we will be doing partial differentiation of this power and equating that to zero. So we will be differentiating this with respect to RL and equate that to 0. We'll also be differentiating this with respect to XL and equate that to 0. So differentiation with respect to RL. So this is 1 half of VTH square differentiation of RL divided by RTH plus RL square plus XTH plus XL square. Uh, so once we differentiate this, it comes equal to 1 half of 1 half of VTH square into differentiation of this. नीचे आपका RTH plus RL square plus XTH plus XL square differentiation of U by V. Fine. Differentiation of RL will be 1 minus RLSA differentiation of V, that is 2 RTH plus RL. 1 half of VTH square RTH plus RL square plus XTH plus XL square minus 2RL RTH plus RL. ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं. नीचे आपका RTH plus RL square plus XTH plus XL square square. So this is 1 dP by dRL. Now we have another equation. We have to actually equate this to 0. dP by dRL equal to 0. So once we equate this term equal to 0, so from there what we'll be getting is ये नीचे वाली term तो 0 हो गई. ऊपर हमारा रहता है 1 half of VTH square 1 half of VTH square भी इसके साथ on the right hand side ये भी 0 हो जाएगा. तो हमारा रहता है RTH plus RL square plus XTH plus XL square minus 2RL RTH plus RL equal to 0. RTH जब हम इसको expand करेंगे this will be equal to RTH square. इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को हम एक्चुअली राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे and we'll be left with
xth plus xl square here, इसको हम ओपन करेंगे, 2rl rth माइनस माइनस प्लस 2rl square minus rth plus rl whole square, that means minus rth square minus rl square minus 2rth rl, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इसका और इसका भी एक कैंसिल आउट हो गया। सो वी हैव xth plus xl square equal to rl square minus rth square, which implies rl square is equal to rth square plus xth plus xl whole square, which implies rl is equal to under root of rth plus xth plus xl square। सो ये हमारी एक इक्वेशन अभी तक निकल गई फ्रॉम इक्वेटिंग dp by drl equal to 0, the partial differentiation of power with respect to rl equal to 0. Once we do that, we are getting this term rl is equal to rth plus xth plus xl का whole square. Now equating now substitute क्या अंडर रूट में क्या rth square dpa by dxl of that means 1/2 of vth square dou by dou xl of rl by rth plus rl square plus xth plus xl square, so which implies 1/2 of vth square. Differentiating this now with respect to xl, rth plus rl square plus xth plus xl square square. It's again differentiation of u by v. Differentiation of rl with respect to xl will be 0 minus differentiation of rlse, differentiation of xth plus xl square with respect to xl, इसका 0 हो गया, इसका आपका 2 xth plus xl, so this is equal to 1/2 of vth square माइनस बाहर 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस this is minus vth square rl xth plus xl divided by this whole term. Now equating this equal to 0, we get ये नीचे तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, rl भी 0 हो गया, we'll simply be getting xth equal to minus xl here. Fine, and we equate this term equal to 0, वहाँ पे खाली xth plus xl equal to 0 रह जाएगा, that means xth is equal to minus xl or xl equal to minus xth. xl is equal to minus xth, ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी. So actually we have found out the relationship between xl, we have to actually find out the relationship between zth and zl. Fine, so हमारी एक तो ये वाली इक्वेशन आ गई नंबर 2 वाली, और हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई. From equation number 2 we have seen that xth is equal to minus xl at maximum power point. So once we substitute that here in equation number 1, substitute 2 in 1,
एक्स टी एच इज इक्वल टू माइनस एक्स एल, तो ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे आर टी एच स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आर एल विल बी इक्वल टू आर टी एच, आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। फाइन। सो आपको रिलेशनशिप आ गई अब, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। So what you are seeing is that at maximum power point, RL will be equal to RTH and XL will be equal to minus XTH. In other words, RL plus XL is equal to RTH minus XTH, और in other words अगर हम इसको कमिंग जे भी यहाँ पे लगा के ZL is equal to, this is not ZTH, this is complex conjugate of ZTH. ZTH is equal to RTH plus GXTH. This term here represents the complex conjugate of it. So ZL is equal to the complex conjugate of ZTH. Therefore, for maximum power point, the load resistance, the load impedance has to be equal to the complex conjugate of the Thevenin's impedance in case of AC circuits. And what will be the maximum power that will be transferred to the output? We have seen in case of DC circuits, it is equal to V square by 4 RL. हमारे पास पावर की इक्वेशन क्या है? We have 1/2 of V, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। VTH square RL by RTH plus RL square plus XTH plus XL square. Now we know at maximum power point RTH is equal to RL and XTH is equal to minus XL. So from there we see that 1/2 of VTH square into RL, ये RL RTH की जगह पे RL में लिख सकता हूँ, so this becomes 2RL, so that becomes 4RL square. XTH की जगह पे मैं minus XL लिख सकता हूँ, तो ये तो 0 हो गया, एक RL और RL कैंसिल आउट हो गया, so this becomes equal to 1/2 of, not 1/2, 1/8 of VTH square by RL. Pmax in case of DC circuits was V square by 4RL. Here Pmax is equal to V square by 8RL. Fine, but this is the average power we are talking about. So the condition for maximum power transfer in case of AC circuits is when your load impedance is equal to the complex conjugate of the Thevenin's impedance, and the maximum power that will be transferred at that time, maximum average power rather that will be transferred at that time will be equal to VTH square divided by 8 RTH or RL, you can say either ways. जी, yes, XL और XTH के क्या? हाँ, आवाज नहीं क्लियर आ रही। किसको माना है जैसे? हाँ? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि ये एक्सएल और एक्सटीएच किसको माना है सर आपने? ये मेरा छूट गया था, लेट ज्वाइन किया था इसलिए। XL और XTH किसको माना है? You have the Thevenin's impedance, you have the load impedance, ठीक है। तो लोड में भी आपको इंडक्टिव कैपेसिटिव एलिमेंट्स होंगे, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी XL
एंड थेवेनिन्स इम्पीडेंस में भी आपके इंडक्टिव कैपेसिटर, आपका जो कंप्लीट सर्किट होगा उसमें भी इंडक्टेंसेस होंगी, कैपेसिटेंसेस होंगी, उसको जब हमने वहां से थेवेनिन्स इम्पीडेंस निकाली तो उसमें भी एक कॉम्प्लेक्स टर्म होगी, दैट विल बी the reactive part representing the reactive part of those combined inductances and capacitances, that is xth. ओके जरूर। So find the value of ZL for which maximum power will be transferred, and also the value, also the maximum power that will be transferred. इन शॉर्ट इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकाल लो एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ZTH, तो आपको ZL मिल जाएगा वहां से।
कितना आया जड़ल? 3 minus 1.5 J. नहीं, सिंपल सा है। 12 एम्पेयर को ओपन किया, आपकी जो टोटल इम्पीडेंस है ऊपर दैट इज 3 प्लस 6J दैट इज इन पैरेलल विद 5 ohms. So 3 minus 1.5 J. No, सर आया 3.35 x। एक मिनट मैं देखता हूँ। ठीक है। 3 plus 1.5J, ठीक है। 3 plus 1.5J is actually ZTH, so ZL will be 3.3 minus 1.5J. And what will be P max? VTH निकालने की जरूरत नहीं, VTH भी आपको वैसे निकालना है। For finding out P max, you have to find out the value of VTH. What will be VTH equal to? कितना आ रहा है VTH? बीटी आ रहा है माइनस के 900। माइनस माइनस कितना? एच का बता रहा हूँ सर, वैसे बीटीएच आ रहा है माइनस के 30i। 30i आ रहा है, सर बीटीएच बता रहा था मैं, का स्क्वायर बता रहा था।
VTH का वैल्यू बताओ जरा जल्दी। सर VTH 55 आ रहा है। So VTH are at minus 10.8 plus 15.65. सर minus 30 J. सर VTH minus 60 J. सर जी सर 33.54 एंगल 153.43 आ रहा है। हेलो 33.54 एंगल 153.43। हर कोई अलग अलग आंसर बता रहा है। कितना आ रहा है VTH? सर minus 60 J. इनको मैं खुद कैलकुलेट कर लेता हूँ।
current divided law 12 into सर VTH 5J आ रहा है सर. Sir, 36 minus 89. 18G. $60 minus $30J. किसी को ये वैल्यू आया? So, जी. can you solve? I mean, everybody's getting different answers. Simply by current divided law, the current through this, not, this is not the value. Minus 6I into 5. Minus 30J is answer. Minus 30I is the answer. Yes, sir. अब तो ये आया सर -30J. Sir, 30 minus 30. ठीक है, by current divided law, this current I1 is simply equal to 12 into opposite impedance, that is 3 minus 4J. 3 minus 4I divided by 3 minus 4J plus 5 plus J10. So upon solving this, you are getting minus 6J. Fine. So अगर minus 6J ये है तो VTH is voltage across this 5 ohm resistor. So that is 5 into minus 6J. That is simply minus 30J. So ये 30 angle minus 90 हो गया. तो VTH square Pmax is therefore 1 by 8. VTH square is 30 square divided by RL. That is RL is 3. तो ये हो गया आपका
ठीक है। इसमें एंगल नहीं आएगा इस एंगल में किसमें? 33 पॉइंट। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे आपको वीटीएच का मॉडुलस लेना है, खाली मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है सर। एवरेज वैल्यू is not a complex number. Find ZL for maximum value delivered to this ZL for maximum power transfer. Forty ohms, 60 angle 080. ठीक है। ZL निकालना है, खाली आपको मैक्सिमम पावर तो निकालना नहीं है। तो VTH निकालने की जरूरत नहीं है, आपको खाली ZTH निकालना है इसमें। जी Sorry, sir. My connection has lost because internet issue. So sorry for that, sir. Find out the value of ZL for this circuit for which maximum power will be delivered. ZTH निकालो, खाली VTH निकालने की जरूरत नहीं है।
Sir, 29.27 angle minus 43.5 degrees. You're telling me the value of ZTL, huh? ZL or ZTH. Let DH, sir. ZL उसका complex conjugate होगा. So 158 minus G21. नहीं नहीं. Sir, 21.23 minus 20.15 J. कैसे आया? Sir, 40 और 40 पैरेलल में और 80 और minus 10 J पैरेलल में और इनके साथ सीरीज में 30. ठीक है. J30 plus 40 parallel 40 plus 80 parallel minus J10. तो आपका आंसर आ रहा है ZL जो आ रहा है आपका, not ZTH. ZL is 21 minus 23 minus 20.15. ये ZTH आपका plus 20.15 J आएगा, which is equal to 29.27 angle minus 43.5 degrees. वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट हो गया, करंट सोर्स आपका ओपन हो गया. You have to find the effective impedance across this path. So you have to actually find out the impedance accordingly. Okay, fine. So we'll be now discussing about RMS values. So we know that our voltage waveform is sinusoidal in nature, our current waveform is sinusoidal in nature. It's having an equal positive half as well as equal positive and negative half. If we find out the average value of this, the average value of this over the complete cycle will be equal to 0. Fine. So the average value of voltage of an AC voltage of an AC current over the complete cycle is 0. We already know the formulas for VT and IT, that is the instantaneous voltage of values, instantaneous values of voltage as well as that of current. VT equal to Vm cos omega t plus phi. Similarly, we can say IT is equal to Im cos of omega t plus phi I. So वो तो हमें पता है, but this gives us the instantaneous value of voltage or current. But instantaneous value of voltage or current is not something that we need all the time. We need to find out what is the mean value of this voltage or current. Now finding out the mean from the uh, simply finding out the average value will not give us the mean because it will be equal to 0. So what we do is we find out its root mean squared value. Fine. So root mean square value, or it is also known as the effective value, gives us an idea about
the mean value of this particular function without uh, by actually adjusting the negative half cycle. Fine. What we do in case of RMS, that's also known as the root mean square. We first of all square this function. By squaring this function, the negative half cycle also becomes positive. Then we take its mean and then we take its root value so that that square is also compensated for. So that value which we actually get from that is known as the RMS value, or what is also known as the effective value. So it is actually that value that we talk about in डे टू डे लाइफ. जैसे हम बोलते हैं कि हमारे घर पे आज वोल्टेज 200 वोल्ट से या 180 वोल्ट से, जो भी जितना पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं, everything that we are actually talking about is actually the RMS value, the effective value of voltage that is being delivered, or that is or the power that is being consumed. वो सारे values कौन से values होते हैं? That is the RMS value that we are talking about. So it actually represents, it actually is an analogous to DC component, DC circuits. What we are trying to do is, जो हमारा AC system है, we are trying to view it as a DC circuit. If we had if we were transforming an AC circuit to a DC circuit, what would be the value of voltage that we would be getting? What would be the value of current that we would be getting? So DC equivalent value of AC quantities is what is known, what is the RMS value. So you can say it is the DC equivalent value of AC circuits. Now, whether it is voltage, current, or power, their DC equivalent, their DC analogous values is what is an RMS value. So how to actually calculate RMS value? You have to take first of all the square of that function, then you have to take its mean value. मीन जैसे कि हमने मीन और एवरेज जैसे कि हमने कल निकाला फॉर जैसे हमने पावर के लिए निकाला था, and then also take its root so that we get the, so we are able to cancel out the CAD component in this system. So say for example, we have any function x of t, its RMS value is given by x RMS is given by, first of all, squaring this function, then finding out its average value by integrating it over the time period t, and then taking out its square root. Fine. Now we have a function, say for example vt equal to vm cos of omega t. So if we want to find out the vrms value of this function, vrms will be equal to what? It will be equal to vm cos omega t square of this, then integrating this over the complete cycle 1 by t, and then taking out its uh, square root. So this becomes equal to 1 by t vm square cos square omega t dt इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t. तो vm स्क्वायर तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, सो वो बाहर निकलेगा अंडर रूट. सो ये अंडर रूट के भी बाहर में निकाल देता हूँ, vm बाय अंडर रूट ऑफ t, दिस इज 0 to t cos square omega t dt. Fine. So cos square omega t, you can write that as 1 by 2, 1 plus cos 2 omega t divided by 2. डायरेक्टली हम cos square omega t को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, so we are converting it into 1 plus cos 2 omega t divided by 2. So once we have this function, now we can integrate this. So vrms will be equal to vm by root t
1/2 इंटीग्रल के अंदर आपका 1 प्लस कॉस टू ओमेगा टी है, तो 1 प्लस कॉस टू ओमेगा टी, तो 1 प्लस ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रल ऑफ 0 to t cos to omega t, it will be equal to 0 simply, क्योंकि कंप्लीट साइकिल पे हम कर रहे हैं। तो दिस इज Vm by root 2t into root t, so root t cancels out, so Vm by root 2, so Vrms is equal to Vm by root 2। ये जो इंटीग्रल है ये डायरेक्टली इक्वल टू 0 आप ले सकते हो, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ कोसाइन फंक्शन ओवर अ कंप्लीट टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 0। सो Vrms इज इक्वल टू Vm by root 2। ऐसे ही आप I का भी निकाल सकते हो, IRMS वैल्यू भी आपका Im by root 2 आएगा। So what we are doing is we are finding out the root mean squared value. So if for any function xt, root mean squared value means taking its square first, then finding out its average value or mean value over the complete time period t, and then applying the square root so as to nullify the effect of square that we have taken earlier. So this gives us the DC equivalent value of our function. So for finding out the अगर हमारे पास जैसे वोल्टेज की फंक्शन है Vt equal to Vm cos of omega t, so once we find out the RMS value of this function, we see that over the complete time period 0 to t, that's actually 0 to 2 pi भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, instead of writing t you can write 0 to 2 pi, one and the same thing, integrated over 0 to 2 pi with respect to t, with respect to omega t rather, actually this is actually d omega t. Fine, because our time here is actually 2 pi, it's actually an angle rather than simply a time. So Vrms is equal to Vm by root 2, and similarly in a similar manner IRMS will be equal to Im divided by root 2, irrespective of the value of whatever your phase will be, even if our function is Vm cos of omega t plus phi, वो phi actually cancel out हो जाएगा। आपका जो RMS value है that will always be equal to Vm by root 2, and IRMS will be equal to Im by root 2. Now this is our DC equivalent value of our system, ठीक है। So say for example you have been given any function Vt now equal to, say for example 230 cos of omega t plus 30 degrees. Now if you were asked to find out Vrms of this function, so you know from here that Vm is equal to 230, this is actually the peak value, so Vrms will be equal to 230 divided by root 2. 160 to 2.63 volts. Fine. So this is the value that actually we talk about in our day-to-day lives. कितनी voltage आ रही है. Even when we connect a voltmeter, it actually gives us the RMS value of our
RMS readings, not the peak value readings or not the average value reading. It tells us the RMS value that we are measuring. Whatever we are measuring is actually the RMS value. So now if you have any function, you know how to find out its RMS value. Now we know VRMS is equal to VM by root 2, IRMS is equal to IM by root 2. कल हमने P average की फॉर्मूला निकाली थी. P average is equal to 1 by 2 VM IM cos of theta V minus theta I. Now we if VRMS is equal to VM by root 2, so VM is equal to root 2 VRMS. This is root 2 VRMS, and similarly IRMS is equal to IM by root 2, so IM is equal to twice root 2 IRMS cos of theta V minus theta I. So root 2 into root 2 is 2, 2 or 2 cancels out, so VRMS into IRMS cos of theta V minus theta I. So this is now the RMS value of power that we can measure. ऐसे ही हमने P average निकाला था for we had found out P average for a simple resistive circuit, 1/2 of VM IM. वहाँ पे theta V minus theta I was equal to 0, so cos of 0 was 1. So again, if we substitute for VRMS and IRMS here, it will be equal to simply VRMS into IRMS. Fine. We had also found the average value as 1/2 of complex conjugate square into R. Fine. तो अगर हम I का वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं, this will now simply be equal to IRMS square into R, or this will also, you can also write it as वही RMS square divided by R. ठीक है. तो ये P की फॉर्मूलाज है जो आपने ऑलरेडी DC सर्किट्स में पढ़ी थी. P is equal to simply V into I. Now which V into I? VRMS into IRMS. Now from you will actually see this formula being used in AC circuits as well. Now but when will we be referring to this formula in AC circuit, P is equal to VI, or P is equal to I square R, or P is equal to V square by R? Which values of V and I will be talking about? We'll be talking about the RMS values of voltage and the RMS values of currents. ठीक है. So these are the DC equivalent circuit में भी यही formulas use होती थी. P is equal to VI, P is equal to I square R, P is equal to V square by R. So you can use these formulas in AC circuits as well. But when we will be talking about P is equal to VI, VI is here specifically RMS value and I is also RMS value. Yes. सर ये cos phi कहाँ चला गया सर? जो पहले आपने फॉर्मूला लिखा cos थीटा v minus थीटा I, दूसरे वाले में कहाँ चला गया? इधर नीचे मैंने बोला for a resistive circuit P average is given by 1/2 of VM IM. For a resistive circuit theta V minus theta I is equal to 0, so cos 0 is equal to 1. तो वहीं से वो that has vanished out for a resistive circuit. So now for a resistive circuit you can simply write for an AC circuit also P is equal to VI, P is equal to I square R, P is equal to V square by R. बट यहाँ पे अब ये दिमाग में रखना है कि ये जब हम ये फॉर्मूलाज बता रहे हैं, वी आर टेलिंग दीज आर फॉर्मूलाज applicable to AC circuits. We are specifically talking about which values of voltage and current. We are talking about the RMS values of voltage and RMS values of current. Now this type of question you may encounter such questions in gate examination. You'll be given any function, you'll be asked to find out the RMS value of this function.
2, 4, 6, 8, 10, 0. So this is actually current flowing through any circuit, and the peak value of this is 10. So you'll be asked to find out, say for example, जैसे यहाँ पे you will be told to find out the determine the RMS value of current. One, you have to determine the RMS value of current. Two, you have to determine the power absorbed by a 2 ohm resistor when this current is flowing through it. So normally तो ऐसी कोई current होगी नहीं, but these type of questions have been are normally asked in GATE examination. In some competitive examinations में तो यार ये SSC JEE वगैरह के exams में. So you'll be given a different types of waveforms. You'll be asked to find out the power absorbed by a circuit. To find out the power absorbed by a circuit, you actually need to find out the RMS value of this current first of all. So you need to first of all, to find out the RMS value of the current, you need to first of all identify what is the function IT of this system, IT of this particular function. Okay? So if you look at this function IT from 0 to t, it is simply a ramp function. From 0 to t, it is a ramp function, and slope of this ramp function is 10 divided by 2, that is equal to 5. So from 0 to t, this function you can simply write it is equal to 5t. ठीक है? So जब t1 होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, जब t2 होगा तो इसका वैल्यू 5 into 2 that is equal to 10 होगा. From 2 to 4, it is a constant function but a negative constant function. ठीक है, ये भी यहाँ पे -10 है, तो ये simply -10 के बराबर आता है. And it is periodic after every 4 seconds. तो 4 seconds के बाद ये repeat हो जाता है. तो RMS value आप खाली तब निकाल सकते हो जब आपकी function periodic होगी. अगर आपकी function periodic नहीं है, if function is not periodic, then you will not be able to find out the RMS value. Now you know the function, you know what is the function. Now you can find out the RMS value. RMS value IRMS will be equal to square root of 1 by t. The time period here is t equal to 4 seconds. We are finding out over the cycle 1 t equal to 4 seconds. Integrating this from 0 to 4 second and इसका square. ठीक है? So actually you are squaring this, finding out mean value by integration and then finding out its root mean square. So the integral of 1 by 4 तो ऐसे ही है. I square t आपकी क्या है? I square t is actually varying from 0 to t, 0 to 2. I square 2 is 5t, so 5t square dt, plus from 2 to 4, it's simply equal to -10 dt. तो ये अब आपकी function है. So this becomes 1 by 4, 25t square, 25t cube by 3, 0 to 2 limits, plus minus rather -10. ये simply t हो गया, 4 minus 2 that is 20, so ये -20 हो गया. -20 इस सबका square root. So apply t equal to, apply the limits, 8 cube by 3 minus 0, 25 into 8 by 3 minus 20,
डिवाइडिंग दैट बाय 4 और उसका स्क्वायर रूट 3.415। अच्छा एक चीज रह गया यहाँ पे, ये -10 स्क्वायर भी था। -10 स्क्वायर मीन्स 100, ये 200 बन जाएगा, +200 है ये यहाँ पे। (25 into 8 divided by 3) Eight 8.1165. 8.165. So IRMS is equal to 8.16. Now simply the power absorbed by this 2 ohm resistor will be IRMS square into I square R. ठीक है, I square R, that is 8.16 square into R जो है आपका यहाँ पे 2 है। (133.3 watts). Fine. Tell me the RMS value of this function. Zero यहाँ पे, ये 4 है, and this is pi, 2 pi. What will be the RMS value of this function? सर ये तो डीसी फंक्शन है ना सर, नेगेटिव में नहीं गया। DC ना तो हम इसको बोल सकते कि ये DC है, ना तो हम इसको बोल सकते एक्चुअली AC है। दिस कैन एक्चुअली बी एन AC, दिस इज मोस्ट लाइकली जो इसकी वेव फॉर्म दिख रही है ये AC है विद अ DC ऑफसेट। ठीक है, अगर DC फंक्शन जैसे आप बोल रहे हैं ना, जो रेक्टिफाइड वोल्टेज होती है वो ऐसी होती है। ओके सर, ओके समझ गया। जो इसका नेचर है ना, ये साइनोसाइडल फंक्शन ही है, बट इसको प्लस DC कोई वैल्यू ऐड किया हुआ है, +2 something like that. Whatever, you have to find out its RMS value. So it is a sinusoidal function, but you have to find its RMS value. So IT किसके बराबर होगा पहले? What will be IT for this case? सर 4 sin t। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया AC वोल्टेज है, ये AC वोल्टेज है with a DC offset. ये सर That means it 4 has mod actually sin t been आ जाएगा इसका। shifted by 2. So ये simply 2 minus 2 cos और इसका जो पीरियड है एक्चुअली पाई, इट इज कंप्लीटिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी 2t है, 2 है, 2 minus 2 cos t है इसका। ठीक है, आपके पास एक साइन कोसाइन फंक्शन है 2 cos 2t का मतलब क्या है? 2 cos 2t का मतलब है
ऐसी कोई फंक्शन है जिसका फ्रीक्वेंसी 2 रेडियंस पर सेकंड है, फाइन। अब इसी को इन्वर्ट कर दिया, डेट मीन्स -2 कर दिया, तो ये नीचे की तरफ आएगा। ये अब आपका -2 cos t हो गया, और इसको हमने +2 कर दिया। +2 से क्या हो गया कि ये जो x एक्सिस हो गई आपकी, अब आपकी शिफ्ट हो गई नीचे की तरफ। ये ऊपर इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगा, तो अब ये फंक्शन ऐसी आ गई जो आपकी यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये आपकी फंक्शन है, इसका RMS वैल्यू आपको निकालना है। ये कैसे निकाला सर आपने ये फंक्शन? ये क्वेश्चन देख के आपको फाइंड आउट द RMS वैल्यू ऑफ द ऑफसेट साइन वेव, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये एक साइनोसाइडल फंक्शन है, बट इट हैज बीन ऑफसेट विद अ DC वैल्यू। तो अगर हम इसको पहले नीचे शिफ्ट करेंगे, इस फंक्शन को, इसी फंक्शन को जो आपको देख के, ठीक है, इसको नीचे हम शिफ्ट करेंगे ऐसे। ये 0 to 4 वैरी हो रहा है, इट कैन वैरी बिटवीन -2 and 2 इफ इट इज अ कोसाइन फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है आपकी, ये फंक्शन कौन सी, ये तो कोसाइन फंक्शन है, ये साइनोसाइडल फंक्शन नहीं है, बिकॉज एट 0 इट इज हैविंग अ सम पॉजिटिव वैल्यू। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, -2 है, सो -2 cos 2t। but then we are offsetting it by further, we are adding +2 to this particular function, so that it shifts upwards into the positive half cycle, so that it oscillates between 0 and 4. आ गया समझ सर अभी। सर ये 0 और 4 का पहले मीन निकालो, वो 2 है, उसके अक्रॉस अब आपको इसको उसी हिसाब से शिफ्ट करना है। अच्छा सर, हम ये ना करके अगर वो लगाए हम, मतलब 4 mod sin t, तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? 4 sin t 4 sin t, mod sin ठीक है, t बोल रहे हो? मोड 4 4 mod mod sin t ऐसी फंक्शन होगी जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई है, वो तो फिर डीसी हो वो साइन नहीं है। साइन फंक्शन ऐसी होती है, से फॉर एग्जांपल मॉड साइन टी मींस ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो उसी टाइम पे फिर से जंप करेगा। वो जो वेरिएशन है ना यहाँ पे, वो वेरिएशन नहीं है इसमें, यहाँ पे एक कर्व है बॉटम पर। ये सर यहाँ पे मतलब वो एंगल यहाँ पे जो मतलब इसे रिपीट करेगा वो एंगल चेंज हो जाएगा यहाँ पे, है ना सर? ओके। यहाँ पे वही है, आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद स्क्वायर, मीन, रूट, वो तो इजी है। IRMS कितना आ रहा है इसका? अब एक सिंपल कांस्टेंट वैल्यू, एक सिंपल DC वैल्यू, √2। सर इसका इतना आ रहा है जैसे कि अंडर रूट में 4 पाई प्लस 2 अपॉन पाई। पाई पाई हाँ पाई की पाई बोल रहे हो? वो मतलब 180। √6 आ रहा है इसका आंसर।
इसका जो पीरियड है वो पाई है, क्योंकि इट्स पीरियोडिक ये पीरियोडिक पाई के अक्रॉस ही है, 2 पाई के अक्रॉस नहीं है। सर वही तो लिया है, पाई तो लिया। अगर आप 2 पाई भी लोगे वैसे भी फिर भी आंसर तो सेम ही आना चाहिए। I square t, that means I square 2 minus 2 cos 2t का होल स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 cos square t minus 2ab 8 cos 2t। हाँ बराबर उठो बेटा ऐसे कितना आ रहा है आंसर? Under root 6 pi. सर हम्म सर √6 आ रहा है आंसर। यस सर √6 √6 आ रहा है सर। √6 ही आएगा, ये सर √6 आएगा इसका। सर हम इंटीग्रेशन साइंटिफिक इक्वेशन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। ये वो करके दिखाना सर, मैं करके दिखाता हूँ, हो नहीं रहा। नेट पे वीडियोस पड़े हुए हैं, वो देख लो। ओके सर। यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊं? जरा ये पहले सिंपल कुछ कर लेते हैं। इसकी फंक्शन बोलो क्या है? What is vt equal to here? 5 or 0 to 1 सर and minus 5. 0 ठीक है, आप 0 to 1 to 1 यस सर, और 1 to 2 हो जाएगा -5। फाइन। तो यस इसका RMS वैल्यू आप निकाल सकते हो। इट विल बी सिंपली 5 square और both half cycles। वैसे क्या आएगा इसका RMS वैल्यू? क्या नाम चाहिए उसको? नहीं, 5 ही आएगा, 10 कैसे आएगा? पीक वैल्यू से ज्यादा RMS वैल्यू कभी होगा नहीं। सॉरी मैं उसको बता रहा। RMS वैल्यू सिंपली विल बी 5 वोल्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये जो नेगेटिव हाफ है जब उसको आप स्क्वायर करोगे तो एक सिंपल डीसी कर्व आ जाएगी। तो वो जो डीसी कर्व है उसका सिंपली वैल्यू 5 वोल्ट्स आएगा। सर 5 आ रहा है सर, 5 वोल्ट। इसकी फंक्शन जरा बोलो।
4, 5, 6. This is 4 minus 4. This is 4. What will be the function of this file? ये सर 1 to 2 हो जाएगा, ये माइनस का 4 जो भी है, और 1 से 2 तक 0 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा 4। सर 0 से 1 -4 हो। -4 ये 0 इसके बाद पीरियोडिक होगा। -4 0 4 -4 0 4 -4 0 4 सर टाइम पीरियड हो जाएगा इसका 1 से 3 हो जाएगा, 3 सेकंड जो है। it is periodic over 3 seconds, so you Yes can sir, find 3 out the RMS value of this. RMS value कितना आएगा इसका? रूट में 32/3 सर। Hmm, 32/3. 3.26. इसकी जरा फंक्शन बोलो क्या है? सर एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 1 से 2 0 सर। टी स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर नहीं होता है। यस सर, टी स्क्वायर। 1 से 2 0, 0 तो इसका RMS वैल्यू कितना आएगा? सर 0.3162। root of 1/2.
इसकी फंक्शन बताओ। एफ ऑफ टी इज 2t सर। बस उतना ही। पहले वाली यहाँ से जीरो से 1 तक की सर, और दूसरे वाले में नेगेटिव हो जाएगी यहाँ तक 3 तक। पूरा पीरियड का बताओ मुझे, पीरियड कितना है इसका? इसका भी सर 4। हाँ तो t इक्वल Yes, टू sir, 4 हो जाएगा। 0 से 4 तक बताओ। सर मतलब इसे तोड़ के करेंगे ना, 0 से हाँ 1 तक करेंगे मतलब 2t, फ्रॉम और 0 1 to से 1, 3 तक करेंगे माइनस के 2t। 0 to 1 it is 2t, ठीक है 1 सर। to और 1 से लेके 3 तक करेंगे इसका माइनस का 2t, और 3 से 4 करेंगे 2t फिर दोबारा से। माइनस 2t नहीं है, 2 minus 2t. 2 minus 2t। 3 से 4, 3 से 4 क्या है? 2t माइनस 4 सर। सॉरी सर, माइनस 2 प्लस 2t। जीरो से 1 तक सिंपली इसका स्लोप तो हर जगह पे 2 ही है, तो ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक 2t है। ये फंक्शन 0 से स्टार्ट नहीं हो रही ऊपर वाली, क्योंकि इसमें ऑफसेट है, इट्स ऑलरेडी अबाउट 2, तो 2 से स्टार्ट हो रही है एंड इट इज डिक्रीजिंग, सो माइनस 2t। फिर 3 से 4 ये नीचे की तरफ है, इट हैज एन ऑफसेट ऑफ -2, बट फंक्शन जो है इटसेल्फ पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव स्लोप जा रहा है उसका, तो -2 + 2t। सर हम्म सर हाँ हाँ सर आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसका RMS वैल्यू निकाल लेना इस ट्रायंगुलर फंक्शन का। ट्रायंगुलर फंक्शन इनमें से सर थोड़ा रह गया, अभी निकाल रहे हैं बस। ट्रायंगुलर फंक्शन इनमें से सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है।